हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, इन विच वी विल गोइंग टू डील विथ बायोफिजिकल प्रोफाइल. So, introduction of biophysical profile. A biophysical profile is a test done after the 28th week of pregnancy. This non-invasive diagnostic test help evaluate the health of fetus. It measures body movement, muscle tone, breathing movement, heart rate and amniotic fluid level. बायोफिजिकल प्रोफाइल जो टेस्ट होते हैं वो 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं और जनरली ये जो प्रोसीजर्स होते हैं वो नॉन इन्वेसिव होते हैं। मीन्स इसमें हम बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते इन डिवाइसेस को, जनरली बॉडी के बाहर से ही हम इवेलुएट करते हैं। जिससे कि फीटस की हेल्थ को हम रेगुलर मॉनिटर कर सके। इसके अंदर जो मेजर करते हैं हम बॉडी मूवमेंट करते हैं फीटस की, और मसल टोन, जो ब्रीथिंग मूवमेंट है, और हार्ट रेट फीटस का, और अमनियोटिक फ्लूइड। A biophysical profile, a technique to forecast a fetal well-being, focus on fetal biophysical findings that include heart rate, movement, breathing, and amniotic fluid production. जनरली जो बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम जो फीटस का वेलबींग है, फीटस हेल्दी है और आइदर अनहेल्दी है, वो पहले से हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं जैसे कि फीटल की हार्ट रेट कितनी है, मूवमेंट कितनी है, ब्रीथिंग, और जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन है वो कितना है। ये जनरली 5 पैरामीटर्स को कंटेन करता है, जैसे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट, fetal breathing, fetal movement, muscle tone, and amniotic fluid. Next is definition. The biophysical profile is a test used to evaluate the well-being of the fetus. The biophysical profile uses ultrasound and cardiotopography (CTG), also known as electronic heart rate monitoring, to examine the fetus. जो बायोफिजिकल प्रोफाइल है वो एक ऐसा टेस्ट है जिससे कि हम इवेलुएट कर सकते हैं फीटस की हेल्थ स्टेटस को, और जनरली इसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को और कार्डियो टोकोग्राफी को, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी कहते हैं, जिससे कि फीटस को प्रॉपरली एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बायोफिजिकल प्रोफाइल. BPP is a prenatal assessment tool that evaluates fetal well-being using ultrasound and fetal heart rate monitoring. It helps detect fetal hypoxia and guide decisions regarding the time of the delivery, especially in high-risk pregnancy. बायोफिजिकल प्रोफाइल एक ऐसा प्री नेटल असेसमेंट टूल है जिससे कि इवेलुएट कर सकते हैं फीटल हार्ट रेट को बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, और जनरली इसमें पता चल जाता है जो फीटस का ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है, और इससे कि जो डिसीजंस ले सकते हैं फर्दर, जैसे कि टाइम ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा, और कौन कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी और उनकी जो डिलीवरी का पैटर्न कैसे रहेगा, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट. There are 5 components measured during the biophysical examination. A score of 2 points is given for each component that meets criteria as listed in the table below. The test is continued until all criteria are met or 30 minutes have elapsed.
The point are then added for a possible maximum score of 10. So जो कंपोनेंट है वो मेजर करते हैं 5 बेसिकली, जो बायोफिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, और इसमें जनरली जो हर एक कंपोनेंट का स्कोर होता है वो 2 पॉइंट में दिया जाता है। और इसके बाद हम एक टेबल देखेंगे, उसमें होगा कि जैसे कि 2 पॉइंट है फिर 0 पॉइंट किसको मिलेगा। एंड देन ये जो टेस्ट है वो तब तक किया जाता है जब तक कि इसके पूरे क्राइटेरिया फिल हो जाते हैं, और जनरली इसमें 30 मिनट्स भी लग सकते हैं अप्रॉक्स। एंड देन जो ये पॉइंट होते हैं उनको हम एडिट करते हैं जो 5 कंपोनेंट है, और पॉसिबली जो मैक्सिमम स्कोर आता है वो 100 वो सॉरी 10 आएगा। सो serial number component normal 2 points and abnormal 0 points. So इसमें first point है fetal breathing movement. So if it is normal 2 points, then there will be more than one episode lasting more than 30 seconds in 30 minutes. So if 0 point will be given to the absent or less than 30 second of the movement, gross body movement more than or equal to 3 discrete body or limb movement, and abnormal is less than 3 movements. So next is fetal tone more than or equal to one episode of the flexion and extension, example hand open close, slow return or absent movement, then there will be given 0 points or it will be considered as abnormal. So amniotic fluid volume, at least one vertical pocket more than or equal to 2 centimeter, and abnormal 0 points will be no pocket or it may be more than 2 centimeters. So next is non-stress test NST, reactive 2 acceleration in 20 minutes and non-reactive no acceleration. And next is modified biophysical profile, which consists of non-stress test and ultrasonography determined amniotic fluid index AFI, and it is modified biophysical profile considered abnormal non-reassuring when the NST is non-reactive or the AFI, which is amniotic fluid index, is less than 5. So modified biophysical profile में non stress test और अल्ट्रासोनोग्राफी को ही एक साथ कंसिडर्ड किया जाता है, जिससे कि डिटरमाइन कर सकें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो कितना है, उसको मेजर कर सकते हैं। देन ये एबनॉर्मल तब कंसिडर्ड होता है या नॉन रिएश्योरिंग तब होता है जब जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो नॉन रिएक्टिव आए, मीन्स जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो 5 से कम आए। नेक्स्ट इज
Next is the 5 parameters of the biophysical profile. Is There are 5 parts of biophysical profile. The first is a non-stress test, which assesses the fetus heart rate in response to its movement or contraction. सो जनरली जो 5 बायोफिजिकल प्रोफाइल्स है उसमें फर्स्ट तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है और जनरली ये फीटल हार्ट रेट के बारे में बताते हैं, मतलब कि उसको मॉनिटर करेंगे कि जब जो रिस्पॉन्स है मूवमेंट का या कॉन्ट्रैक्शन का, वो रिस्पॉन्स जो है फीटल हार्ट रेट को कैसे अफेक्ट कर रहा है. सो जनरली ये असेस करेंगे फीटल हार्ट रेट आइदर इफ एनी मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज द अदर 4 parts आर असेस्ड बाय अल्ट्रासाउंड. दे इंक्लूड लुकिंग. जो अदर 4 parts हैं वो अल्ट्रासाउंड से असेस किए जा सकते हैं, जैसे कि द फीटस ब्रीथिंग मूवमेंट, द फीटस बॉडी मूवमेंट, द फीटस muscle tone such as flexing and extending limbs, the amount of amniotic fluid. Amniotic fluid is a water-like substance that surrounds the fetus in uterus. So generally जो fetus है वो उसका breathing pattern चेक कर सकते हैं, body movement चेक कर सकते हैं, activity एंड मसल का टोन, आइदर फ्लेक्शन है, एक्सटेंडेड लिम्स है, और एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है जो भी सराउंडिंग है फीटस के इन यूट्रस. Ultrasound examination. During ultrasound, lying down or reclining on an exam table, provider moves a device called a transducer or probe over abdomen to produce sound waves. The transducer converts the sound waves to images that can be viewed on a screen. अल्ट्रासाउंड में जनरली पेशेंट को बोला जाता है कि उनको लाई डाउन होना है, जो भी एग्जामिनेशन टेबल है, और जनरली हमें जितना अमाउंट का जो एब्डोमेन है वो एक्सपोज करना है उतना ही हम करते हैं, स्क्रीन लगाते हैं एंड जो आर्टिकल्स हैं वो अरेंज करेंगे, और उसके बाद जो ट्रांसड्यूसर है, प्रोब है, वो एब्डोमेन के ओवर लगाते हैं और उससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है. सो जो ट्रांसड्यूसर है वो कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को इमेजेस में जो कि स्क्रीन पे दिखती है, जिससे कि फीटल्स का स्टेटस पता कर सकते हैं. Non-stress test. An electronic monitor measures the fetus heart rate while inclining or laying down or an examination table. सो जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग होते हैं वो मेज़र करते हैं फीटल हार्ट रेट को, और जनरली आइदर जो वुमेन है वो रिक्लाइनिंग है या फिर लाई डाउन हो गई एग्जाम टेबल पे, एंड देन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्लेस अ बेल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर अराउंड द एब्डोमेन एंड देन द सेंसर मेजर्स रिकॉर्ड द फीटल हार्ट रेट. और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो एक बेल्ट, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी कहते हैं, वो एब्डोमेन पे लगाते हैं वुमेन के, जिससे कि वो रिकॉर्ड कर सकती है फीटल हार्ट रेट को. और जो ये टेस्ट है वो यूजुअली 20 मिनट्स का होता है, बट इट कैन गो 40 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द फीटल एक्टिविटी. There should be 2 or more acceleration in their heart rate. If there are fewer than 2, it may indicate fetus is asleep. In that case, provider may use a buzzer or a loud noise to stimulate movement. In some cases, provider will place a second monitor with a sensor around abdomen. This monitor measures and records uterine contraction.
समटाइम जनरली जो एसिलरेशन दिखते हैं वो दो से ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस में होते हैं जहाँ पे कि फ्यू एसिलरेशन है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि जो फीटस है वो स्लीप हो, सो रहा हो। एंड बट इसके लिए भी एक बजर कर सकते हैं, लाउड नॉइस कर सकते हैं, जिससे कि जो फीटस में सिमुलेशन हो और स्टिमुलेट हो फीटस। एंड जो ये मूवमेंट है उसके बाद भी ऐसे भी कुछ होता है कि जो सेकंड मॉनिटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं एब्डोमेन सेंसर को लगाने के लिए, जिससे कि जो मेजर्स हैं वो और रिकॉर्ड कर सकते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। Non-stress test is mostly widely used primary testing method for assessment of fetal well-being. जनरली नॉन स्ट्रेस टेस्ट बहुत ही कॉमन है जो कि वाइडली यूज होते हैं, जिससे कि फीटल वेलबींग को चेक कर सकते हैं, पैटर्न असेस कर सकते हैं। एंड then it describe fetal heart rate acceleration in response to fetal movement as a sign of fetal health. So इससे हम fetal के हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं, जिससे कि fetal movement में, fetal health में ये चीज़ें देख सकते हैं। Then involve the use of Doppler detect fetal heart rate acceleration coincident with fetal movement perceived by the mother. Sometime जो fetal heart rate है वो ड्रॉपलर से डिटेक्ट होगी, जो फीटल मूवमेंट है और जो मदर को भी परसीव हो रहे हैं, देन फील हो रहे हैं मीन्स मदर को। सो एज हाइपोक्सिया डेवलप्स दीज फीटल रेट एसिलरेशन डिमिनिश। अगर हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, फीटल हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिमिनिश कम भी हो सकता है पूरा। एबनॉर्मल रिजल्ट, two or more acceleration that peaks at 15 beat per minute or more above baseline, each lasting 15 seconds or more, and all occurring within 20 weeks of beginning the test. So दो और दूर से ज़्यादा जो पीक होते हैं कि 15 बीट पर मिनट आया है या उससे ज़्यादा बेस लाइन आया है 15 सेकेंड में, तो वो जनरली विद इन 20 सेकेंड्स भी कर सकते हैं बिगनिंग टेस्ट से। सो अगर 40 मिनट्स कर रहे हैं या लॉन्गर ट्रैकिंग है तो फीटल स्लीप साइकिल शुड बी परफॉर्म बिफोर इंक्लूडिंग दैट वाज इनसफिशिएंट फीटल रिएक्टिविटी। सो जब भी हम टेस्ट करते हैं तो इससे पहले हम ये देख लेंगे कि जो फीटल की स्लीप साइकिल कैसे है, कि फीटल एक्टिव कब है और उसकी एक्टिविटी कम कब हो रही है। So one acceleration was just as reliable as two in predicting healthy fetal status, and also acceleration with or without fetal movement may be accepted. So जो एक acceleration होता है वो reliable होता है दो predicting health fetal healthy status के लिए, और generally जो acceleration होता है उसमें fetal movements जो होते हैं वो assess हो भी सकते हैं और नहीं भी accept हो सकते हैं। Abnormal result, baseline oscillation of less than 15 beat per minute, absent acceleration. So generally अगर abnormal result है तो जो oscillation है वो 15 से कम आएगा बीट पर मिनट, एंड जो acceleration है वो absent भी होंगे, और late acceleration with spontaneous uterine contraction. सो अगर लेट ऐसे डिक्लेरेशन है तो उसमें स्पॉन्टेनियस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। Abnormal results were associated consistently with evidence of uteroplacental pathology, and examples are IUGR, polyhydramnios, and meconium. For fetal behavior stage, so state first F fetal, so is a quiescent state, quiet sleep with a narrow oscillatory bandwidth of fetal heart rate. State 2
is include frequent gross movement, continuous eye movement, and wider oscillation of fetal heart rate. It is an autologous of rhythmic eye movement or active sleep in the neonate, and include continuous eye movements in the absence of body movement and no heart rate acceleration. And fourth stage is one vigorous body movement with continuous eye movement with heart rate acceleration. This state corresponds to the awake state in the newborn. Next is fetal breathing. First are gaps or sites which occurred at a frequency of 1 to 4 per minute. So the second irregular burst of breathing occurred at the rate up to 240 cycle per minute. These later rapid respiratory movement were associated with the REM, rapid eye movement sleep. Diurnal means fluctuation, variation within the 24 hours. So because breathing is substantially diminished during the night but increases somewhat following maternal meals. Today, so total absence of the breathing was observed in some normal fetus for up to 122 minutes, indicating fetal evaluation to diagnose absent respiratory motion may require long period of observation. So generally इस पे जो fetal ब्रीथिंग पैटर्न है वो जनरली इरेगुलर होगा, ब्रस्ट होगा, मे बी जो साइकिल होती है वो 240 साइकिल पर मिनट हम देखते हैं, और इसमें रैपिड आई मूवमेंट होगा और समटाइम इट मूवमेंट ऑफ स्लीप्स हो सकते हैं. सो देयर में भी, और इसका जो फ्लक्चुएशन रहता है, वेरिएशन रहता है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मॉर्निंग में जो फीटस है वो एक्टिव रहे या आफ्टरनून में एक्टिव रहे, नाइट में उतना एक्टिव नहीं रहे, तो वो वेरी करेगा फीटल की एक्टिविटी में. और आइदर जो ड्यूरेशन है वो किस टाइम हम चेक कर रहे हैं, आइदर मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में. और समटाइम जो ये फीटल ब्रीथिंग है वो इंक्रीज भी हो जाती है जो मैटरनल मील्स है, या जो फीटल एक्टिविटी है वो मैटरनल मील्स के बाद भी एक्टिव हो सकती है. सो देन इसमें ऑब्जर्व करते हैं हम, और इसके बाद इंडिकेट करते हैं और डायग्नोस करेंगे अगर एब्सेंट है रेस्पिरेटरी मोशन. Amniotic fluid volume. Decreased uteroplacental perfusion may lead to diminished fetal renal blood flow, decreased urine production, and ultimately oligohydramnios. So जो fetal amniotic fluid volume है उसमें जो यूट्रोप्लेसेंटल परफ्यूजन है वो कम हो जाता है, और जो फीटल रीनल फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, और यूरिन प्रोडक्शन और
एलिगोहाइड्रोमिनोज होगा, लेस अमाउंट ऑफ amniotic fluid. So then amniotic fluid index is so 6 is suspected chronic asphyxia if it is generally more than 36 weeks or deliver. If less, repeat the test within 4 to 6 hours. And 4 and below strongly suspect asphyxia if more than 36 week delivers. If not, repeated after 4 to 6 hours. For 120 minutes, persistent score is less than 5, deliver regardless.
6 suspected chronic asphyxia if more than 36 weeks, deliver if less repeat test in 4 to 6 hours. 4 and below strongly suspect asphyxia if more than 36 weeks, deliver if not repeat after 4 to 6 hours for 120 minutes. Persistent score is less than 5, deliver regardless. So indication of all biophysical profiles: high risk pregnancy such as hypertension, preeclampsia, gestational diabetes, intrauterine growth retardation, IUGR, post-term pregnancy more than 40 weeks, oligohydramnios and polyhydramnios, decreased fetal movement, previous stillbirth और pregnancy loss. सो हाई रिस्क केसेस जैसे कि अगर हाइपरटेंशन है या प्री एक्लेम्सिया है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और अगर फीटल का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गया है, बढ़ नहीं रहा है यूट्राइन बेबी, एंड देन पोस्ट टर्म बेबी जो ज़्यादा 40 वीक्स के बाद भी है तो भी ये सब इंडिकेट कर सकते हैं कि कैसे जो फीटल की कंडीशन है थ्रू बायोफिजिकल प्रोफाइल्स। ऑलिगोहाइड्रोमिनोज और पॉलीहाइड्रोमिनोज एक्सेस ऑफ लेस अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड को कर सकते हैं और फीटल मूवमेंट को कम कर सकते हैं, एंड प्रीवियस और स्टिल बर्थ ऑफ प्रेगनेंसी लॉस। So next, modify biophysical profile. MBB combines NST, amniotic fluid index, faster screening method, abnormal result, and proceeds to full biophysical profile. So जो modified biophysical profiles होते हैं वो NST और amniotic fluid इंडेक्स को कंबाइन करके करते हैं, जिसमें कि फास्ट स्क्रीनिंग मेथड होगी और एबनॉर्मल रिजल्ट होगा, तो उसके बाद हम फुल बायोफिजिकल प्रोफाइल करेंगे। एडवांटेज ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल, सो इसमें नॉन इन्वेसिव और सेफ मेथड है ये, और डिटेक्ट क्रोनिक फीटल हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है तो भी चेक कर सकते हैं, एंड हेल्प रिड्यूस पेरीनेटल मोर्टेलिटी, और इससे जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी है वो भी डिक्रीज होगी क्योंकि पहले से ही असेसमेंट कर लेंगे तो जो फीटल डेथ रेट है वो भी कम हो जाएंगे, और एग्जामिन कर सकते हैं तो उसका हम मैनेजमेंट भी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। लिमिटेशन, ये टाइम कंज्यूमिंग रह सकता है और 30 मिनट्स अप टू मोर भी लग सकते हैं इसमें, और मे मिस एक्यूट चेंजेस और रिक्वायर्ड ट्रेन पर्सनल एंड इक्विपमेंट, इसमें ट्रेन पर्सनल चाहिए और इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोफिजिकल प्रोफाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।